Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 7 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, I am going to discuss various applications of computer in our daily life. Although we have discussed some applications of computer briefly in our previous lectures, but in this lecture I am going to discuss detailed applications of computer in different fields around us. So what are the major objectives of this lecture? The major objectives of this lecture is to understand the applications of computer in different fields like entertainment, like education field. Then we will discuss the applications of computer in media. We will also discuss the application of computers in the banking sector as well as in the medical field. So the first use of computer is in entertainment industry. Most of us use computers for the purpose of entertainment. So we can play games. A lot of us play games on our mobile phones. We can also play games on our computers also. तो आजकल एक नया ट्रेंड भी है जिसे हम ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं कि हमारे पास जो आजकल मॉडर्न गेम्स आ रही हैं जैसे रेसिंग गेम्स हैं या थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स हैं, वो सारी की सारी मल्टीप्लेयर ऑप्शन के साथ आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट पर कनेक्ट करके दुनिया में मौजूद डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और उन गेम्स को प्ले अराउंड कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ ए गुड स्पीड इंटरनेट कनेक्शन and you can connect to the internet and play these games with people online. Next, we can use computers to listen music. हम में से अक्सर लोग म्यूज़िक और सॉन्ग्स सुनते हैं. There are a lot of websites on the internet from where you can download the musics or songs. Next, we can use computers to watch movies and dramas. YouTube is a good source of dramas and movies. You can watch different sort of videos there. Then we have social media. The basic purpose of the social media is to create connections among people so that people are connected. जैसे Facebook पे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है. इसी तरह हम ट्विटर पर फॉलोअर और फॉलोई बनते हैं, ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है. इफ़ वी मूव ऑन द पिंटरेस्ट, वी आर अगेन creating different sort of boards and pins and we are sharing these information. So we are using social media for the purpose of entertainment, although a lot of people are using social media for news sharing, for views sharing, but we mostly use social media for the entertainment purpose. We can chat on the social media. We have a habit of posting different sort of jokes, funny videos on the social media, especially Facebook. Now we have a professional platform known as LinkedIn. LinkedIn is a different sort of social media. अब LinkedIn में बेसिकली हमारे पास दुनिया भर से जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इस पर रजिस्टर होते हैं. अब प्रोफेशनल का मीनिंग यही नहीं है कि कोई पर्सन जो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे है वही इसको लॉगिन कर सकता है. इनफैक्ट ये इसका पर्पस जो है वो प्रोफेशनल है. यानी यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल्स हियर, यू कैन put your educational or academic record here, then you can also put down your experiences and skills. इसमें आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उन कनेक्शंस का आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको डिफरेंट जॉब्स पोस्टिंग के बारे में
पता चलता रहता है। तो लिंक्डइन का पर्पज़ जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, जबकि लिंक्डइन का जो मेजर पर्पज़ है वो कनेक्शंस क्रिएट करना है, अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोफेशनल रिलेशंस बिल्ड करना। देन ऑब्वियसली we can use computers for the purpose of chatting, as chatting is another application of the internet. There is a slight difference between the chatting process that was used about 10 to 15 years ago. Now the chatting process is modernized. Previously क्या होता था कि इंटरनेट पर चैटिंग की वेबसाइट्स होती थी, वहाँ पर चैट रूम एग्जिस्ट करते थे और यूज़र्स जो थे उन चैट रूम्स को ज्वाइन करते थे. नाउ हाउ ए यूज़र विल ज्वाइन ए चैट रूम? ईच चैट रूम had a defined purpose. Some of the chat rooms were made for the discussion on technology, while other chat rooms were designed or created to facilitate people in discussing their views about gaming, movies, entertainment. So each chat room had its own purpose. So a person could find chat room according to his or her interests and could join the chat room to take part in the chatting process. लेकिन आजकल जो चैटिंग है उसमें हम फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप को यूज़ कर लेते हैं. देर आर सर्टन अदर एप्लीकेशंस लाइक वाइबर दैट वी कैन यूज़ फॉर चैटिंग. सो नाउ द चैटिंग इज़ मोर लाइकली टू बी एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, जस्ट लाइक वी आर यूजिंग SMS सर्विस इन आवर मोबाइल फ़ोन्स. तो आज की चैटिंग जो है वो प्रीवियस चैटिंग से डिफरेंट है. और चैट रूम्स में नॉर्मली ये होता था कि बहुत सारे लोग होते थे और हम ग्रुप चैट करते थे. ऑल्दो देयर वाज एन ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल चैट आल्सो, बट मोस्टली वी यूज टू चैट इन ग्रुप्स. इन मॉडर्न एरा we can create groups in the Facebook Messenger as well as WhatsApp, so that we can have a group chat. Now the next application in the entertainment industry is the video calling or video meeting. There are a lot of software available like Zoom, GoToMeeting or Google Meet that we can use for the purpose of video calling. अब वीडियो कॉलिंग का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, हम वीडियो कॉलिंग को प्रोफेशनली भी अडॉप्ट कर सकते हैं. लाइक जैसे अब पूरी वर्ल्ड वाइड ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, rather than going to a specific place and conducting a meeting there. People are now preferring these software to conduct meeting online. So you can use this software for entertainment purpose also. You can talk to your friends easily. So video calling has applications in both entertainment and professional industry also. Next we have application of computer in the education field. There are a lot of applications of computer in the field of education. Now the first application I am going to discuss is the learning management system or an LMS. LMS is the building block of a distance learning program. Now what do we mean by the distance learning? डिस्टेंस लर्निंग में आप किसी लोकेशन पे बाउंड नहीं हैं, आप किसी लोकेशन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, टीचर किसी लोकेशन पर एग्जिस्ट कर सकता है, और आपको एक मीन या एक वे चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकें. नाउ दिस मीडियम इज़ प्रोवाइडेड बाय द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन रजिस्टर ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. Teachers can post the lecture material on the learning management system and the students will get the notification regarding the lecture material. Similarly, teacher can create a discussion
on the learning management system. Student can comment and post also. Then obviously an advanced learning management system provides different facilities like assignments and quiz. Teacher can post the quiz questions there and ask the students to fill out the questions with their answers. So लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन भी होता है कि टीचर वहाँ पर कोई भी नोटिस प्लेस करे तो वो नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स को चला जाएगा. तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं जैसे हम आजकल गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. सो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म facilitates the distance learning program, and it is in fact a good learning management system designed by Google Corporation. You have the facility of registration, you have the facility of sharing the lecture material, you have the facility of chatting with each other, you have the facility of quiz and assignments there. So it is a good learning management system. इसी तरह जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना एक कस्टमाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है जिसको वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक पोर्टल. एकेडमिक पोर्टल आल्सो फैसिलिटेट्स द एजुकेशनल प्रोसेस. नाउ एकेडमिक पोर्टल इज स्लाइटली मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू द learning management system. Although different learning management system can also have the facilities of the academic portal, but academic portal is slightly advanced. जैसे academic portal जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का है उस पर हम रिज़ल्ट्स अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड कर सकते हैं. इसी तरह इन फ्यूचर हम उस पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर सकेंगे, इन फ्यूचर हम उस पर असाइनमेंट्स अपलोड कर सकेंगे. सो जो एकेडमिक पोर्टल है वो स्लाइटली ज़्यादा एडवांस्ड है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से. इसी तरह एकेडमिक पोर्टल को एग्ज़ामिनेशन ऑफिस यूज़ करता है आपके रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए. क्वाइट पॉसिबल स्कॉलरशिप का रिकॉर्ड भी उस पर आना स्टार्ट हो जाए, टाइम टेबल उस पर आना स्टार्ट हो जाए. सो एकेडमिक पोर्टल जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं एडवांस्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए. Now next we have the online courses. There are a lot of different websites on the internet that you can use to enroll yourself in online courses. अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो different websites आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज ही नहीं करवाती बल्कि ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स भी रन करती हैं. मैं आपको बारी बारी अब ये साइट्स दिखा भी देता हूँ. Let's suppose we have udemy.com. Now this is udemy.com. You can see a lot of different courses here. All these are different courses. Now each course has an associated cost. Similarly, each course has its own rating. और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स में आज तक कितने लोग इनरोल हो चुके हैं. इससे आपको कोर्स की पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा. अगर आप इन कोर्सेज में से नहीं भी देखना चाहते तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग वेब डेवलपमेंट. सो अब आपको यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे. सिमिलरली या आप किसी भी कोर्स पर क्लिक करके यू कैन चेक द कोर्स कंटेंट्स, यू कैन चेक द प्राइस ऑफ द कोर्स, यू कैन चेक द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, you can check how many resources are present in the course. So this is basically an online course website. Now some courses are free while other courses are paid. What is the difference between a paid and a free course? Normally when you enroll yourself in a free course, you can get the training and the training material, but at the end of the course you will not
get any sort of certificate. लेकिन कई कोर्स इंटरनेट पर ऐसे भी हैं कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन वो नॉर्मली बहुत शॉर्ट कोर्सेज हैं, लाइक 4 आवर ट्रेनिंग और एन 8 आवर ट्रेनिंग. लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली किसी कोर्स को करना है, जैसे ये आपके पास 47 या 48 आवर्स का कोर्स है, तो अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो आपको इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट साइट है कोर्स एरा. कोर्स एरा को हम ओपन कर लेते हैं. अब कोर्स एरा में बेसिकली आप देखें यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं. सो इट मीन्स द कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड हेयर आर actually prepared or made by teachers of these universities. So ये courses जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, and you can browse through different courses just like here. In the computer science category, here are different courses and here are various degree programs. So you can enroll yourself in a degree program or in a course as well. Now let's suppose I open certificates related to HTML. Now here are different courses related to HTML. Now each course has an associated university. Each course has a rating. Similarly, it has the number of enrolled students and the number of total students who have enrolled till from the start of the course. Then there is level of the course. So आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इस कोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर आप किसी भी कोर्स को ओपन करें तो आपको उसमें कोर्स की डिटेल्स नज़र आ जाएंगी कि आपके पास कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, फिर उसके बाद कितने टाइम में आपने इसको कंप्लीट करना है, बेसिक इसकी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर कौन से हैं. यू विल आल्सो बी एबल टू सी द सिलेबस ऑफ द कोर्स. यू कैन रीड द रिव्यूज़ एंड you can check the enrollment options. Now again, here are two different enrollment options. You can either go for the free course or you can go for the paid version. If you go for the free version, you will get all the course material, all the assignments and all the necessary training. But at the end of the course, you will not get this sort of certificate. And if you enroll yourself in the paid version, the rest is the same, and at the end of the course you will get a properly signed certificate from the Coursera website, and you can put this certificate on LinkedIn. और कई ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर आप यहाँ से फुल फ्लेज्ड कोर्सेज करें तो वो आपको कोर्स एग्जेम्पशन भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. इसी तरह EDX पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. The next use of computers in the education field is the online attendance system. Now, online attendance system can facilitate both students and teacher in many ways. Teacher can mark attendance of student easily. Similarly, student can check his or her attendance at any time so that he or she can get an idea of attendance shortage. जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो रहा है. वहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम ट्रेडिशनल से हट के मॉडर्नाइज हो गया. नाउ व्हाट हैपन्स देयर व्हेन टीचर कम्स इन द क्लास, ही जस्ट ओपन्स a QR code on the screen. Now every student has to scan the QR code by using mobile phone. Now when a student scans the QR code, the attendance is marked automatically, so no time is wasted in marking attendance. Similarly, teacher can check the attendance shortage with just a single click option.
You don't need to calculate the attendance shortage manually. Next, we have online classrooms, just like the classroom provided by the Google Classroom. In this classroom, we can conduct different sort of activities. We can share the material, we can post a question, we can create a discussion, we can take part in a quiz or an assignment. So Google Classroom is a good online classroom. Next we have CBT. CBT stands for Computer Based Training. अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें मार्केट में डिफरेंट DVDs मिलती हैं जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स. नाउ व्हाट एडवांटेज डू वी गेट? वी कैन बाय these DVDs and use these DVDs to learn different things at our own place. अब इस CBT प्रोग्राम का हमें क्या फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा तो हमें ये होता है कि वी आर नॉट बाउंड टू एनी लोकेशन और टाइम कॉन्स्टेंट. All we need to do is to purchase a DVD and play the DVD on our computer in our leisure time. So अगर हमारे पास 10 days का फ्री टाइम पीरियड है तो हम उस 10 days में उस ट्रेनिंग को कर सकते हैं. अगर हमारे पास फ्री पीरियड नहीं है, हम फ्री नहीं हैं, तो हम उसको 1 month 2 month पर डिवाइड करके कर सकते हैं. तो लो कॉस्ट ट्रेनिंग है CBT ट्रेनिंग बेसिकली. लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो CBT की कैटेगरी में कुछ आते हैं और कुछ नहीं भी आते. जैसे अगर आप कोर्स इरा पे कोर्सेज देखें ना, तो इसमें आपको हर वीक असाइनमेंट या क्विज जो है उसको मैनेज करना पड़ता है, यानी एक टाइम लाइन के साथ आपको चलना पड़ता है. तो अगर आप उस टाइम लाइन को फॉलो करते हैं तो यू आर गुड टू गो, एंड इफ़ यू डोंट फॉलो द टाइम लाइन you will not be graded in the course. कोर्सेरा के जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली टाइम लाइन पर डिपेंड करते हैं. लेकिन अगर आप यूडेमी पर जाएं तो इसके जो कोर्सेज हैं वो टाइम लाइन पर डिपेंड नहीं करते, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द यूडेमी कोर्सेज डोंट हैव असाइनमेंट्स और डोंट हैव क्विजेज. all you need to do is to watch the tutorial videos and learn using these videos. although यूडेमी पर भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते. लेकिन कोर्सेरा में आपको टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वीकली कोर्सेज चलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पाइथन का कोर्स ओपन कर लेता हूँ और लेट्स सपोज हम यहाँ पर IBM डाटा साइंस कोर्स पे चले जाते हैं. अब यहाँ पर देखें आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको प्रोजेक्ट्स वो पोस्ट करेंगे. इसी तरह यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है, ये आपको पूरा इसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि इसका सिलेबस क्या है, वीक 1 वीक 2 उसके बाद वीक 3, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वीक 1 में 2 क्विज़ेस होंगे. सो यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द quizzes also. Some of the courses will have associated assignments or projects also. So you will have to follow these things. Next we have computer aided learning. Computer aided learning is a process that assists teachers and students in the learning process. Like we are using the Google Classroom in this scenario to facilitate the learning process. Similarly, we use multimedia projectors to facilitate the learning process in our physical classrooms. Multimedia projector से हमें क्या एडवांटेज मिलता है? स्टूडेंट्स को स्लाइड्स नज़र आती हैं और स्टूडेंट्स को ये आइडिया रहता है कि एक्चुअली वो क्या चीज़ रीड कर रहे हैं. एंड सिमिलरली टीचर ऑल्सो हैज़ की पॉइंट्स इन हिज माइंड that he or she is going to discuss in the class. So इस तरह से मेन पॉइंट्स जो हैं वो
ओवरलुक या फॉरगेट नहीं हम करते, हम उनको मैनेज कर लेते हैं. I have discussed distance learning previously. Then we have an online examination system. An online examination system is basically an MCQ type paper in which there are questions and multiple choice options. All the students need to do is to read the question and select the appropriate option and jump to the next question. By the end of the test, results are automatically compiled and showed to the student. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो खुद से ही पेपर्स को चेक कर लेता है अगर वो स्पेशली MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. तो एट द एंड ऑफ द पेपर आपको रिजल्ट भी उसका मिल जाता है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में फिर टाइमर का ऑप्शन होता है कि आपको बार बार अनाउंस नहीं करना पड़ता कि टाइम कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ. जैसे स्टूडेंट लॉग इन करता है टाइमर स्टार्ट हो जाता है और टाइमर टिक डाउन करता रहता है. जैसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ख़त्म होती है वो पेपर एंड हो जाता है. तो एक इसमें ये फैसिलिटी है. द सेकंड फैसिलिटी इज़ दैट यू कैन कन्फिगर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम टू शफल द क्वेश्चंस रैंडमली. यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टूडेंट के पास है ज़रूरी नहीं स्टूडेंट 2 के पास भी वही क्वेश्चन नंबर 1 हो. Next, there are a lot of animations available on the YouTube or any other media, and you can use these animations to understand different things. Like you have confusion in understanding the working of a computer mouse, you can go to YouTube and find out the animation to understand the working mechanism. If you are a chemistry student and you are confused that how molecular structures or how electrons move, you can go to the internet and find out the animation to understand the working in detail. Similarly, if you are interested in finding out how a car engine works, you can find out the animation to understand these things. So animation को हम education purpose के लिए use कर सकते हैं और ये हमारा understanding process easy बना देती है. Next we have the media industry. Computers are heavily being used in the media industry. सबसे पहले आप न्यूज़ स्टिकर्स देखते हैं, आपको चैनल के टॉप पे चैनल के बॉटम पे डिफरेंट बार्स नज़र आती हैं and each of these bars are showing different sort of news. Now these stickers are managed by using computers. Well, actually these stickers are designed graphically by the use of computers. You can see different colors, different shining schemes and different font styles, different writing colors, and all these are managed by using computers. Then there are channel icons. At different events the color of channel icon changes or the animation pattern of the channel changes. This is managed by media. Then we have virtual reality. A lot of channels are providing the virtual reality. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी वर्चुअल रियलिटी दिखाई थी कि एक आपके पास 3D इन्वायरमेंट होता है लेकिन वो आपको ऐसा इफेक्ट प्रोवाइड करता है कि आप इन रियलिटी या इन रियल लाइफ उस इन्वायरमेंट का पार्ट हैं. तो अक्सर आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं कि जब बारिश होती है या तो जो न्यूज़ एंकर है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आपको फिरता हुआ नज़र आता है जिसमें बारिश हो रही है, उसने अम्ब्रेला कैरी की है, वो आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहे होते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन किस टाइप की है. सो वर्चुअल रियलिटी इज़ हेविली बीइंग यूज्ड इन द मीडिया इंडस्ट्री नाउअडेज. देन ऑब्वियसली मीडिया पर आपको एनिमेटेड वीडियोस नज़र आती हैं. स्पेशली ये जो कोरोना का इशू चल रहा है इस पर आप डिफरेंट चैनल्स देखें तो उसमें आपको एनिमेशंस नज़र आती हैं कि हाउ कोरोना स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हाउ इट एक्चुअली अटैच इटसेल्फ टू द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. तो एनिमेशन हमें मीडिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए. देन ऑब्वियसली द पैनल डिस्कशंस, जो रात को टॉक शोज़ लगते हैं जिसमें डिफरेंट एनालिस्ट बैठे होते हैं और वो आपस में डिस्कशन करते हैं. सो दिस कैन बी मैनेज्ड बाय ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Audio and video conferencing is another application of an internet, and it is just like
an audio or a video call, and you can discuss different things in this. तो जो चैनल्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं, जो पैनल के पर्सनस हैं उनको किसी एक लोकेशन पे होना ज़रूरी नहीं, वो किसी भी लोकेशन पे मौजूद पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं. दैन इन न्यूज़पेपर्स वी आर अगेन यूजिंग कंप्यूटर्स. e-paper, you can use websites to read the newspaper or the e-paper. E-paper stands for electronic paper. Similarly, the newspapers are published using computers. Actually, the newspapers are being designed using computers and again published by using specialized devices. सो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज़ बैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ ईच कस्टमर और ईच पर्सन. तो जब भी आप बैंक में जाते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, ये आपका जो पर्सनल डाटा है या बैंक अकाउंट के रिलेटेड डाटा है वो सारे का सारा कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर करते हैं. इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज सिस्टम में स्टोर होती हैं. वेदर वी डिपॉजिट अमाउंट और वेदर वी विदड्रॉ अमाउंट यूजिंग ए चेक और एन ATM कार्ड, ईच ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटराइज सिस्टम. सो इसी वजह से बैंक्स जो हैं वो इजीली अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मैनेज कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव ATM. वी हैव ATM कार्ड्स एंड वी कैन विदड्रॉ मनी एट एनी लोकेशन. वी कैन even use the ATM cards and credit cards online for e-commerce shopping. We can use these cards on Draz.pk or AliExpress to purchase different things. Now these sort of transactions will also be stored in the computerized system managed by our banks. Now we have mobile banking. Now what is mobile banking? Different banks have their own mobile apps and you can install these apps on your mobile phone. By using these apps, you can perform different sort of transactions. You can transfer money from one bank account to another. Similarly, you can pay your utility bills. You can also recharge your mobile load using these apps. Although these apps are limited in functionality, you cannot create a demand draft using these apps, but still these apps are flexible enough to provide you the basic banking features. So your bank account is in your hands and you can manage different things easily. Now the next application of computers is in laboratories. First of all, laboratories can manage the personal information of a person, of a patient. Then the laboratories can store a list of tests to be conducted. Some good laboratories are actually storing the test history. जैसे आप शौकत खानम या चुगताई लैब को देखें तो वो आपकी बाकायदा टेस्ट हिस्ट्री को स्टोर करते जाते हैं. अगर आप एक किसी स्पेसिफिक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हैं तो जब भी आप टेस्ट करवाते हैं आपको रिपोर्ट के साथ अपनी प्रीवियस हिस्ट्री भी पता चलती है कि आपने प्रीवियसली कब टेस्ट करवाया और कौन कौन से टेस्ट करवाए और उनके रिजल्ट्स क्या थे. सो दीज लेबॉर्ट्रीज आर मैनेजिंग द टेस्ट हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट आल्सो. The machines that are being used to conduct these tests on the blood are computerized in nature. जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं वो जैसे उसको सैंपल प्रोवाइड करते हैं, वो मशीन ऑटोमेटिकली उस पर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करती है, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है और रिजल्ट्स जनरेट कर देती है. Computers are also being used in preparing the lab reports.
You can also check the reports online. Similarly, the bill of the laboratory can also be calculated using the computer systems. Computers are also being used in hospitals to manage both outpatient department and inpatient department. Even in government hospitals like civil hospital, computerized system install कर दिया गया जो कि OPD slips बना देता है. And we have a queuing system that manages the tokens or the queue of the people. Similarly, patient history को मैनेज किया जा सकता है कंप्यूटर्स के थ्रू. डॉक्टर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन का जो रिकॉर्ड है, जो उसकी अपॉइंटमेंट है, उसको मैनेज किया जा सकता है. एंड नाउ डेज डिफरेंट डॉक्टर्स आर going for the computerized prescriptions. So instead of writing the prescription by using pen and paper, doctors actually use computers to write the medication and the instructions related to the medication. Now what is the advantage with this approach? The advantage with this approach is that the writing or the medication written by the doctor is completely readable. There is no sort of problem और no readability problem associated with it. एक मेडिकल स्टोर वाला उस मेडिसिन को इजीली पढ़ सकता है, एक पेशेंट उन मेडिकेशन को और उसके इंस्ट्रक्शन को इजीली पढ़ सकता है. तो कई डॉक्टर्स अब इस सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट हो गए. इसी तरह जो हॉस्पिटल्स में लेबॉर्ट्रीज़ हैं या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो आपकी बिलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं. फिर OPD में ड्रग इशुएंस सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है. इसी तरह इन पेशेंट डिपार्टमेंट में व्हेन एवर ए पेशेंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इट्स रिकॉर्ड इज़ कंप्यूटराइज्ड. सिमिलरली द लोकेशन ऑफ ए वार्ड और ए प्राइवेट रूम इज़ ऑल्सो अटैच देयर. इस तरह पेशेंट की हिस्ट्री, कंसर्न डॉक्टर्स, डॉक्टर के विजिट्स, मेडिसिन, उसके टेस्ट, हर चीज़ को आप कंप्यूटराइज करते हैं. और इन चीज़ों को हम क्यों कंप्यूटराइज करते हैं? फॉर द सेक ऑफ बिलिंग. सो ऑल दिस रिकॉर्ड्स कैन स्मूथ डाउन द बिलिंग प्रोसेस. जब हमारे पास इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड होगा कि एक पेशेंट किस टाइप के रूम में है, एक पेशेंट को कौन कौन से डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं, उसको मेडिकेशंस कौन सी मिल रही हैं, उसके कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, सो एट द एंड बिलिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है. Then we have medical devices like blood sugar monitor, digital blood pressure monitor. All these medical devices are basically computing devices. Now the computers that are being used in these devices are not general purpose computer. Instead, these computers are specific purpose computer that are used for medical purpose. Similarly, we have a thermal gun to check the temperature. We have patient monitoring system to measure the heart rate, the respiratory rate, the ECG and the oxygen level of student in ICUs. इस तरह आपके पास CPAP, BiPAP और वेंटिलेटर डिवाइसेस हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं लंग डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए. और इन डिवाइसेस की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट कन्फिग्रेशंस होती हैं. So these devices are tiny computers. Similarly, we have a pacemaker that regularizes the heartbeat of a patient. It also contains a small computing chip inside it. ये basically heartbeat को detect करता है और उसको normalize करता है. इसी तरह different medical procedures में computers को हम use करते हैं. जैसे एंडोस्कोपी में कैमरास हम यूज़ करते हैं. इसी तरह जब किसी पर्सन को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. ये जो हमने पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बताया, ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है. इस तरह एडवांस फॉर्म हमारे पास रोबोटिक सर्जरी. और रोबोटिक सर्जरी क्या, इंस्टेड ऑफ ए पर्सन बीइंग ऑपरेटेड बाय ए डॉक्टर, there is a robot that performs surgery on a computer, on a patient. Now then we have a digital x-ray. A digital x-ray is an image of your bones that is formed on a computer screen and later on it is printed using a specialized printer.
Similarly, there are CT scan and MRI machines that can create 3D image of your brain, of your backbone, of your muscles. It can also show the spinal cord or any sort of damage to the spinal cord, and that too in 3 dimensions. So all these devices are using computer software to create 3D images. Similarly, we have computers in ECG, echocardiography, ultrasound and coronary angiography. So these are different medical procedures using computers. Then we have the grocery stores and medical stores. इन दोनों पर हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर. सबसे पहले बिलिंग के लिए आप चीज़ें परचेज़ करते हैं, बास्केट लेके जाते हैं और कैश काउंटर पर वो चीज़ों को स्कैन करते जाते हैं और उससे बिलिंग कर लेते हैं. इस तरह जब आप कोई चीज़ वापस करने जाएँ, रिटर्न करने के लिए ग्रॉसरी स्टोर्स को यूज़ करते हैं. ग्रॉसरी स्टोर अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए कि कौन सी चीज़ उनके पास बल्क क्वांटिटी में और कौन सी चीज़ उनके पास ख़त्म होने वाली है, उसको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. इस तरह अपने स्टोर के स्टैटिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उनका स्टोर जो है वो प्रॉफिट में ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा. सिमिलरली मेडिकल स्टोर भी इसी टाइप के पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर में एक और एडवांटेज या एक और फंक्शन आ जाता है, एंड दैट इज़ द लिस्ट ऑफ एक्सपायरिंग मेडिसिन. ए स्टोर ओनर कैन चेक the details of expiring medicine easily so that he or she can return the expiring medicine to the manufacturer to replace them. इसी तरह कुछ मेडिकल स्टोर्स जो हैं they are looking towards the online delivery of medicine. Just like we are using different food delivery apps, the medical store owners are now thinking to adopt the same process. यानी हम घर बैठे मेडिसिन ऑर्डर किया करेंगे और कोई डिलीवरी पर्सन वो मेडिसिन हमें घर पे पहुंचा जाया करेगा. तो इस तरफ भी मेडिकल स्टोर्स वाले मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव द ई-कॉमर्स. Now e-commerce, as I already have discussed, that e-commerce stands for electronic commerce. There are a lot of applications like OLX, Draz, Amazon, eBay, AliExpress and drop shipping that we can use for buying or selling things online. Then we have online cab services like Uber or Cream. We can call for a cab by sitting at our home. हमें घर से बाहर जाके कोई कैब ढूंढने की ज़रूरत नहीं. वी कैन ओपन अप दीज एप्स ऑन आवर मोबाइल फ़ोन एंड वी कैन पुट डाउन आवर डेस्टिनेशन एंड कंफर्म द पिकअप. इसमें हमें कोई फेयर का प्रॉब्लम नहीं आता है. जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पुट करते हैं हमें एक एस्टिमेटेड फेयर नज़र आ जाता है. हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर अगर हमने जाना तो हमें इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी. तो हम जैसे ही उसको कंफर्म करते हैं तो साथ ही ऑनलाइन कैब सर्विसेज वाले कैब भेजते हैं, हम उसमें ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हम उसको पे आउट कर देते हैं. तो इसमें किसी किस्म की इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, यानी किसी किस्म की बहस नहीं है, आपको किसी के साथ निगोशिएट नहीं करना पड़ता. देन वी हैव डिफरेंट फूड डिलीवरी सर्विसेज. वी कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन एंड द फूड विल बी डिलीवर्ड एट आवर होम. आप मोबाइल ऐप्स जैसे फूड पांडा ऐप यूज़ करते हैं, इसी तरह मैकडोनल्ड्स और KFC की ऐप्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आपको डिफरेंट डिटेल्स मिलती हैं, इजीली आप इनको मैनेज कर सकते हैं. रेस्टोरेंट्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है कस्टमर्स के ऑर्डर्स गेट करने के लिए, चाहे आप डाइन इन चाहे टेक अवे के लिए जाएं. कस्टमर ऑर्डर्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं और किस लिए ये काम आता है? बिलिंग के लिए. सिमिलरली डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आर यूजिंग computer for the feedback purpose. The manager there has an iPad or a tab or a tablet PC. So whenever आप बिल पे करने लगते हैं वो आपको वो टैब प्रोवाइड करते हैं और आप उस पर इलेक्ट्रॉनिकली अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं. तो वो फीडबैक से जज कर लेते हैं कि हमने किस तरह इस चीज़ को बेटर करना है. नेक्स्ट, होटल्स कैन यूज़
or restaurants can use the computer software to manage their expenses and incomes. They can calculate the payroll of their employees. They can calculate the cost of raw material they purchased. They can record the number of customers and the billing amount of the customers to judge expense and income. Similarly, there are hotels. Hotels are also using computers. You can book reservation or you can reserve your room both using online medium and offline medium. Similarly, the billing is also managed by the computers. Then we have the travel industry. We can check the flight schedules and bus schedules using websites. Similarly, we can use a website to reserve our seat online. We can also purchase ticket online. Just like we have booking.com. Using booking.com, we can purchase tickets online. We can also check the schedules and purchase tickets online. Similarly, we have Google Maps app in our mobile phone. It also help us in traveling. जैसे कि गूगल मैप ऐप जो है वो आपको डिफरेंट लोकेशन शो कर देती है. आप उसमें किसी सोर्स प्लेस से डेस्टिनेशन का वे आउट फाइंड आउट कर सकते हैं. इट ऑल्सो शोज डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. इट ऑल्सो शोज द डिटेल्स अबाउट द रूट लेंथ and the time required to travel through this route. And in some advanced scenarios, Google Maps also show the status of the traffic. And even if any sort of construction work is going there, Google Maps can notify you. जो गाड़ियाँ हैं उनमें बिल्ट इन GPS सिस्टम है. आप उनमें अपनी डेस्टिनेशन लिख सकते हैं और वो आपको साथ साथ वॉइस के थ्रू गाइड करती रहेंगी कि आप कितने डिस्टेंस के बाद किस साइड पर टर्न करें. तो ये ट्रैवलिंग में आपको कंप्यूटर जो है वो हेल्प आउट कर सकता है. तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी कंप्यूटर की जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे.